welcome back to the show जिसका नाम है The Alternate View with me, your host, Jamie Alter. We've got another great show for you lined up. Our guest today is Pragyan Ojha, someone who any cricket fan will be very, very familiar with. Former left arm spinner for the Indian team, played a lot of test matches, and someone who surprisingly, and I think somewhat controversially, was not picked after he took 10 wickets in his final test match, the same test match against West Indies at the Wankhede Stadium in 2013, which also happened to be Sachin Tendulkar's last test match. A fantastic record as a test spinner, Pragyan Ojha. He's now someone who watches the game very, very closely. He's dabbled in analysis and commentary. He's also part of the IPL Governing Council as the member of the Players Representative Board and someone who I've had the pleasure of speaking to down the years in my career as a sports journalist. And also last year on Akash Chopra's YouTube channel during India's Test series against England. In England, I had the opportunity and the privilege of doing a bit of I wouldn't say commentary because it was more like a live stream watch along with Pragyan. So when I asked him last week if he'd be able to come on the show, and he said sure, I was very very happy. So any minute now प्रज्ञान ओझा हमारे साथ जुड़ेंगे इस शो पे. आज हम बात करेंगे ऑन गोइंग वेस्ट इंडीज इंडिया सीरीज जो कल रात इंडिया ने एक और मैच जीता बड़े टाइट मार्जिन से फिर से एंड टू टेक एन अनअसेलेबल 2-0 लीड इन दैट 3 मैच सीरीज. अब T20s भी हैं, एक ओडीआई बाकी है. हम इस सीरीज पे पूछेंगे प्रज्ञान से, उनकी राय लेंगे. ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट दैट ऑल इम्पोर्टेंट T20 वर्ल्ड कप जो शायद 3 महीने में शुरू होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में. विल टॉक अबाउट हाउ ही फील्स द टीम इज शेपिंग अप. We'll talk about Rohit Sharma, Shikhar Dhawan, Hardik Pandya, Virat Kohli. बहुत सारे प्लेयर्स को लेके हम बात करेंगे फ्रॉम एन इंडियन परस्पेक्टिव. अगर आपके पास कुछ सवाल हैं प्रधान के लिए, मेरे लिए, तो बिल्कुल अपने लॉक स्क्रीन पे आप लिख सकते हैं. एज यूजुअल देयर बी पोल्स फॉर यू टू आंसर. टाइप इन क्विकली on your lock screens because you only have 20 seconds to get your votes in whenever I put a poll. So yes, my name is Jamie Alter if you happen to be here for the first time, and I'm really looking forward to today's show, The Alternate View. तो दोस्तों any second now प्रज्ञान will be joined and like I said आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं. प्रज्ञान is saying hi here. I guess he's going to be joining any second. Hi Pragyan, if you can hear me you can just join as a co-host. Vaibhav Singh is saying hi. How are you? I'm very fine. Vaibhav, फिर से स्वागत है. Pragyan, there'll be a link to say join as co-host. I'm just sending you as well. I'm going to send you right now again. Amandeep, we have a new follower as well. I'm just sending you that link again. Pragyan, if you can just click on this link, then you can join the stream as a co-host. Sajad Saif is saying hi. We have a new follower. Amandeep, good, good, good. आप लोग अपना सवाल भेजते रहिए और मैं प्रज्ञान से पूछूंगा. We've got a good show lined up here. Like I said, polls भी हैं आपके लिए, and it's going to be a very very fun chat. I guess Pragyan is now able to join. If not, if I can get Prajwala to just help you, then we'll get the show started. Until then, welcome back to all the viewers जो पहले जुड़ चुके हैं इस शो पे. अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है. बंदे का नाम है Jamie Alter. The show is called The Alternate View, and for the next 35 minutes we're going to talk cricket with someone who knows cricket very 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 well, having played at the highest level with distinction, highest honors, Pragyan Ojha. If Pragyan is there, I guess he'll just be joining. Be patient. Don't go anywhere, folks. We'll get Pragyan just on the show right now. The team is speaking to him. और जैसे ही वो लिंक आ जाएगा हम शो को शुरू करेंगे. बाकी अगर आपके पास कुछ सवाल है हमारे लिए तो प्लीज गो ahead and ask and I'll make sure that Pragyan gets it. Like I said, we have polls. Yes, he's going to join in 1 minute. No issue. No issue. I'm going to keep the discussion going. तो आप बताइए आपका दिन कैसा चल रहा है. आदर्श सिंह, हाय, हाउ आर यू? आदर्श, आई एम डूइंग वेरी वेरी वेल. हाउ आर यू माय फ्रेंड? आप सभी लोग सीरीज को फॉलो कर रहे हैं. एक तो यार मेरी एक शिकायत है. मानता हूं कि सीरीज वेस्ट इंडीज में चल रहा है, बट इट्स दिस मैच स्टार्ट्स एट 7 o'clock. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड बोथ द मैचेस. बहुत बहुत देर तक जाते हैं ये वनडेज. T20 शायद मैं अपने आप को थोड़ा जोर देके धक्का देके मैं रात तक शायद खत्म करता, लेकिन वनडे मैच जो हमारे सुबह के टाइम खत्म होता है उसको देखना मेरे लिए मुश्किल है. I'll be very very honest about that. I want to know whether how many of you were staying up. But again, आजकल का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है. स्ट्रीम्स और वीडियोस और हाइलाइट्स इतने जल्दी हमारे फिंगर टिप्स पे आते हैं. तो आई लव गेटिंग अप इन द मॉर्निंग एंड विद माय ब्रेकफास्ट
कैचिंग द हाइलाइट्स. और कल अक्षर बापू पटेल, जिसका जिक्र यहाँ पे हो रहा है, कुछ लोग ने अभी अक्षर बापू पटेल का किया है. वैभव सिंह, अक्षर पटेल की बैटिंग कैसी लगी आपको? बेहतरीन. हम जानते हैं कि काफी साल से अक्षर पटेल जो है T20 फॉर्मेट में, खासकर आईपीएल में, अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए वो अपनी बैटिंग डिस्प्ले दिखा चुके हैं, इंडिया के लिए भी दिखा चुके हैं. बट एन इनिंग्स लाइक दिस, chasing 300 plus on a wicket which is a bit up and down, West Indies bowled pretty well. और फिर without the wickets in hand, the way that he batted, मतलब वो छक्के, और खासकर अक्षर पटेल जो आए, उन्होंने शुरुआत से ही बाउंड्री मारना शुरू किया. It was not like he was waiting for the end to explode. He kept on going, and that really helped set the momentum. Yes, here we have Pragyan joining any second now. दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ प्रज्ञान का स्वागत करिए शो पे. For the first time here on Glance Live on the alternate view, former India cricketer and a very, very astute reader of the game and gentleman, Pragyan Ojha. Seems like I आएंगे 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 आएंगे. लकी सिंह विकेट भी निकाला. जी हाँ, विकेट भी निकाला. आदर्श सिंह कह रहे हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस थी. Rahul Gupta saying, hi Rahul, how are you? Seem to have I'm very well, Rahul. I'm very well. I got Pragyan's request and somehow it's now vanished. Pragyan, if you can hear me, एक बार please दोबारा से आप join as a co-host बटन क्लिक करिए और मैं तुरंत आपको इस शो पे लाऊंगा. Rahul Gupta, I'm good. Ajay Bhai is a new follower. I love my dad with a lot of hearts. Hello friend, hello. Lucky Singh, Kyle Mayers का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था हुडा के लिए. बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बॉलिंग करी हुडा ने. Now let's get Pragyan on the show this time around. Like I said, जोरदार तालियों से स्वागत करिए प्रज्ञान ओझा का, former India cricketer on today's show. I'm looking forward to this discussion. Yes, we have him. ऐसे ऐसे बोला हाँ. Lovely. Can you hear me, Pragyan? Yeah, I can hear you now. I think I'm How are you technically doing? challenged. कोई नहीं, the best of it happens with the best of us. कोई नहीं. Thank you, Pragyan, for taking out time, and really lovely to I see know you on this show. it's Thank my you. pleasure. When you're talking about cricket, the who better than you? अरे हम तो बहुत ही मामूली हैं. But I know Pragyan that you've been following this series very 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 closely. Not India's full strength team, as many as 5 players अभी नहीं है टीम के साथ. But that said, how are you seeing the closeness of these results? Are you surprised, perhaps along expected lines? 2 wins, but the team has really been stretched by West Indies. Uh, I think it's a great opportunity for everyone who are part of the team right now because we always talk about we have a larger pool, but it is important also we have to test them at times. And I think this is the best time because we have got at least one, maybe more than 1 year for the 50 overs World Cup. And I strongly feel like, the reason behind why 2011 World Cup was a success for us. See, 1983 was a long ago, so I don't know how they planned it, but I Sure. know how 2011 was planned. MS Dhoni was very, very serious about all the guys who were going to be part of that pool, like say 20, 25 of them. He wanted them to play at least 40 games before the World Cup started, because you may have scored a lot of runs, but if you don't have the experience of dealing with different situations at different times, then you may not feel it during the league matches, but the most important games like the knockouts or the semi-finals or the finals, that's when these experience really help you. Yeah, well said. And I remember, though the 2007 World Cup did not go so well for us, I remember when Greg Chappell came, one of the few things that he did very well, in my humble opinion, was identifying that pool of players 18 months before the World Cup. Forget what happened there. Exactly जो आप कह रहे हो 11 में. And even now, I mean, it starts next October, 15 months away. We have a home World Cup, and I think all the fans of Indian cricket will remember the 2019, how the team did so well to get there, but when you're knocked out again in the semifinals, there is a certain amount of pain which I think still lasts, Pragyan, 4 years.
Keeping in mind what you just said, the planning part as well as the bench strength, very briefly, to what do you attribute this rise in the talent? Is it the IPL? Is it, the domestic structure? Maybe Rahul Dravid's job as NCA coach? I think it's everything put together. If you see, India is doing those in, the A tours, and then under 19 team is traveling. Then when you look at domestic teams, they're not only focusing on those first class games or list A games. So they are going and they are playing with neighboring states, and they're having those small little tournaments during off season where their players are not involved in any kind of cricket. So Mm, if you look at the overall structure, I think it has been brilliant. And yes, IPL gets highlighted because it's in the world stage, and you see every time you talk about Indian cricket, because IPL is telecasted and it has a wider reach. So everybody talks about IPL, but also we have to understand that National Cricket Academy has done a brilliant job saying that all the state teams and the think tank who are planning those A tours and under 19 tours. I think it has been brilliant. Yesterday we saw the way these guys batted. I think the most yep. important aspect of the game, which we were looking to cover, was covered yesterday in a couple of games. Because in one day cricket, I feel somehow after T20 cricket, people have found it little difficult to uh, you know carry on the game, rotate the Yeah. strikes. But yesterday we saw our boys were taking the game deep, and they were trying to find a rhythm. Why one day cricket was so famous? Because the cricket then, which was played, was similar, and then people started playing the same kind of game in one day cricket. But because of T20 cricket, a lot of cricketers, they're working on their bat speed. A lot of cricketers Yep. are working जैसे कि स्ट्राइक रेट एक नया वर्ड आया है. पहले हमने कभी स्ट्राइक रेट के बारे में इतना डिस्कशन नहीं किया. तो Correct, वो correct. चीज तो अच्छी बात है. देखिए, when you are moving ahead, आपको सिचुएशन के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है अपने आप को. जी, बट बिल्कुल. जो पुराने जमाने में जो होता था, लाइक वॉट एवर यू हैड दोज एक्सपीरियंसेस इन द पास्ट, एंड हाउ ओवरऑल क्रिकेटर्स यूज्ड टू प्ले, वो चीज को भी आप साथ लेके चलना पड़ेगा. क्योंकि वी हैव सीन रिसेंटली इंग्लैंड में, एवरीबडी टॉक्ड अबाउट कि इंग्लैंड का क्या अप्रोच है, फियरलेस अप्रोच, दे वर जस्ट गोइंग बैंग 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 आफ्टर द bowlers. But when you play against quality bowling attack and you lose 4 5 wickets, you can't just go bang bang bang. You need to change your game plan, because if you miss out on those 20 25 overs, what will your bowlers do? They Yep. don't have anything to fight back. So that is the reason I truly believe all the team, everyone should have a plan A, but also when the game changes, you also need to change. If you don't do that, then I think best of the sides will find it difficult to win. Absolutely, exactly what you were saying the other day. The game can has its power to change you. तो अगर आप ठीक से adapt नहीं कर पाते हो, especially आजकल के competitive level में, you're bound to fall behind. Before I ask the next question, I want to draw attention. A lot of viewers are loving the fact कि आप यहाँ पे आए हो. One viewer, Naina Sharma, even gave your 6 for 21 best performance in T20s. Thank you for all the love you're showing. मुश्किल है No, दोस्तों, no, आप no. सभी का It's not. सवाल. It's not 6 for 21. It's four wickets. 4 wickets. अच्छा, यहाँ पे some नैना शर्मा put up 6 for 21. आपको याद है? I Was that think perhaps listed? I think she was being very kind to me. She Thank gave you you so two wickets. much. Thank you so much. But it's 4 wickets. It was in Nottingham. My debut match against Bangladesh in the T20 World Cup 2009. And 2009. Yeah, yeah. then I was a man of the Uh, match. uh, Yeah, Fantastic, yeah. So thank you to all the viewers who are yeah. putting questions. दोस्तों, बहुत बहुत मुश्किल है आप सभी सवाल के जवाब करने, because we have very limited time. But thank you for all the love you've shown. Just keeping in mind, अभी आपने जो सब कहा था, the strike rate, the adaptability.
for me, I think one of the key takeaways is how Sanju Samson. Now, I think he perhaps, and I want to get your views, Shad. It seems like he's got a lot of chances, but this is actually only his third ODI. शायद T20 में he's played 14, 15. शायद वहाँ पे इतना हासिल नहीं कर पाए. But when he gets a 40 and a 50 in his three matches, and the last match very very crucial innings. How important is it as someone like a Samson? शायद वो आपके top 15 में नहीं है, but in a World Cup here as well as next year's World Cup, how important is series for someone like a Samson or even a Shubman Gill? एब्सोल्युटली इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए, जब आपके पास इतना पूल रहता है ना, इतना बड़ा पूल रहता है, तो उसका डाउन साइड भी अगर आप देखें, तो जब भी आपको मौका मिलता है, इट विल बी लिमिटेड। आपको Right. अगर आपके पास अगर पूल बड़ा नहीं है, तो आपको शायद 10-12 मैच मिल सकता है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट इंडियन क्रिकेट राइट नाउ, आपको 10 नहीं, आपको 5 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, क्योंकि पूल इतना बड़ा है और कंपटीशन भी इतना मतलब इट्स बिकम लाइक नेक टू नेक। तो Yeah. इसीलिए यू कांट जस्ट से कि मुझे T20 में मौका मिला था या मुझे वनडे में मिला था। दैट्स हाउ इट इज, क्योंकि कंपटीशन है, नए लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, तो यू हैव टू गेट योर ए गेम आउट। दैट्स हाउ इट गोज, क्योंकि Yeah. एंड ऑफ द डे अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, कोई लड़का और परफॉर्म कर रहा है एंड द senior boys get into the side, so unfortunately you will miss Yeah. out. That's the truth. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि rather than thinking about कि मुझे T20 में ज्यादा मिला, वनडे में कम मिला मौका, you should always think about कि मुझे कंट्री के लिए मौका मिल रहा है and I have to grab it. Look Yeah. at what Surya Kumar Yadav has done. uh, he is getting hundreds. Look at Deepak Hooda. He got that Huda, yeah. 100. तो जब आप हंड्रेड्स बनाते हैं ना, तो एनी एनी फॉर्मेट हो या एनी लेवल पे हो, सो देन पीपल स्टार्ट नोटिसिंग यू। आजकल क्या होता है डोमेस्टिक क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी में, आई नो यू बीन फॉलोइंग इंडियन क्रिकेट सो वेरी क्लोजली, बट इफ यू सी, now a lot of cricketers are getting hundreds. The competition has gone up now. Now people are talking Yeah. about who's getting double hundred, who's getting triple hundred. That's how it has gone. So when the competition goes up and when it is like at the peak, you have to Yeah. raise your bar. You can't be like, okay, I got 500s, but somebody like say Sarfaraz Khan, sorry, he got those big 300s. hundreds. Yep. Yeah, it's not about getting 100 or 120 or 130. He was getting like 175, 200. Maybe I think he's got a triple hundred as well. So I think when you see that, then they're actually banging the doors, not knocking. So Yep. it's very good that we have competition, but at the same time, Hmm. everybody has to understand when the competition is high, then you have to go higher. Absolutely, and exactly what he had said after he got that fantastic 100 in the Ranji final. He was asked all sorts of questions, and he said, "मुझे पता है कि मुझसे fitter और भी बंदे हैं जो बहुत hundreds बना रहे हैं. मैं different क्या कर सकता हूँ? That's why I need to score these quote unquote daddy hundreds," and exactly what he did. Before I come to the next question, I'm going to put up the first poll here for our viewers. ये संजू सैमसन को लेके हैं जो अभी हमारे लॉक स्क्रीन पे हैं. दिस इज फॉर द व्यूअर्स. दोस्तों, हैज सैमसन यूज्ड his opportunities well? आपके पास 20 सेकंड है viewers to put in your polls. Next thing I'm going to move on to शुभमन गिल. शुभमन गिल शायद 2.5 साल के बाद, प्रज्ञान, वो उनको एक ओडीआई मैच में मौका मिला. He's done very well in both matches. Where do you see him keeping in mind the all important ODI World Cup next year? Do you think he's done enough to perhaps keep himself in the mix as our third opener, maybe fourth opener? सी, आपके पास 3 मैचेस थे, आपने उनका डिसमिसल देखा? सी, आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल, बट जी. जब आपके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी है, आपको टीम में पहले मैच से ही मौका मिल रहा है Right. एंड यू हैव गॉट अ ब्रिलियंट स्टार्ट, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको बड़ा 100 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यू आर नॉट इवन द थर्ड चॉइस, सी वी आर Yeah, टॉकिंग अबाउट फोर्थ और fact. फिफ्थ। सो आप ऊपर कैसे जाएंगे? यू हैव टू गेट दोस बिग रन्स एंड ही इज इन ट्रेमेंडस फॉर्म। तो वो उनको सोचना पड़ेगा, एक, जिस तरीके से वो रन आउट हुए फर्स्ट मैच में, देन सेकंड गेम द वे ही गॉट आउट दैट कॉट एंड बोल्ड, इट वाज नॉट नीडेड बिकॉज ही इज बैटिंग ब्रिलियंटली, Yeah. गेटिंग रन्स। देखिए, बैट्समैन कब फ्रस्ट्रेट होता है? व्हेन डज ही गो आउट ऑफ हिज जोन? when he's not getting those singles or doubles, or maybe he's trying to chase a certain run rate and bowlers are bowling really well. तो मुझे लगता है
लगता है कि आई थिंक उनको ये सोचना पड़ेगा कि ये अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे आसानी से नहीं मिलते हैं. द बेस्ट एग्जांपल फॉर हिम Yep. इज आई थिंक संजू सैमसन. उनके टैलेंट के बारे में बात करते हैं, पर बिकॉज वी हैव गॉट सम गुड विकेट कीपर्स, तो उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिला. तो जब आपके पास इतना अच्छा मौका है, ऐसी अगर केएल राहुल फिट होते तो मुझे नहीं लगता कि शायद Exactly. शुभमन गिल को मौका मिलता. तो जब मौका मिला है तो दोनों हाथों से ग्रैब करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. और उनको ज्यादा दुख इसलिए होगा क्योंकि स्टार्ट अच्छी मिली थी, और पीछे भी आपको देखना पड़ेगा कि ऋतुराज गायकवाड़ भी बैठे हुए हैं, और उन्होंने भी ढेर सारा रन बनाया हुआ डोमेस्टिक क्रिकेट में. आई थिंक 4 या 500 इज गॉट इन दिस सीजन, विजय हजारे. Vijay Hazare. Were you keeping all this in mind? Up surprised the because perhaps Shubman Gill was not the first choice to open with Shikhar. Like you said, you had Rituraj Gaikwad. There's Ishan Kishan jo job kar rahe hain. Were you surprised by the team's decision to go with him for both No, matches? see, no, not really. I really think Ruturaj, Shubman, and Ishan, they are youngsters. They have done really well to be there. And तीनों में से किसी को भी चांस मिलेगा तो I'm very very happy, Okay. because बहुत बहुत रन बना के आए हैं तीनों लड़के. एंड मुझे पता है कि इंडियन टीम में लिमिटेड चांसेस होते हैं, और जिसको भी मिलता है आई एम रियली हैप्पी फॉर देम. बट सेइंग दैट, जैसा मैं कह रहा था कि शुभमन को तो सोचना पड़ेगा कि क्या करना है. Hmm. क्योंकि अभी देखिए, धीरे धीरे ना बातें होने लगी कि ये तो, मतलब टेस्ट क्रिकेट में भी वही बातें हो रही थी कि ही यूज्ड टू गेट गुड स्टार्ट्स, देन Yep. सडनली यूज्ड टू गेट आउट. तो वो चीज अ, उनका एक क्या कहते हैं ना, टैग नहीं लगना चाहिए उनपे कि हाँ ये तो रन बनाते हैं लेकिन आप सेट होने के बाद आउट हो जाते हैं. सो ये सब कब होता है? जब आपके पास बहुत सारा टैलेंट हो. तो ये भी एक अदर साइड कह सकते हैं, जब आपके पास Yeah. ऑप्शंस ऑफ प्लेंटी हो. तो इसीलिए आपको थोड़ा सा तो टाइट करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उस तरीके का कंपटीशन चल रहा है आजकल इंडियन क्रिकेट में. Yeah. Well said. इसी बात पे मैं हमारे व्यूअर्स के लिए दूसरा पोल लगाता हूँ. Is Gill looking like the third opener in ODIs? Viewers, आपके लिए हैं. Pragyan has said he still thinks perhaps he's fourth and fifth. कीपिंग इन माइंड आपने 3 बार शायद इस बात का जिक्र किया है कि द लेवल ऑफ कंपटीशन, द फाइट फॉर स्पॉट्स, एक टाइम पे शायद आपको 10 मैच मिलते, अब शायद 5 और 3 से आपको गुजारा करना पड़ेगा. Keeping in mind that the pressure on the senior players, the ones who are 35 plus, the ones who perhaps are out of form, where do you see someone like Shikhar Dhawan? He's fit, he's been scoring pretty good runs, but the World Cup is still 15 months away. If the form starts to taper off, do you see the selectors persisting with him 15 months from now in the ODI World Cup? आह, ये देखिए, अभी जैसे आप कह रहे थे दिल्ली दूर है. सो आई थिंक आई एम सीइंग द राइट साइंस, लाइक व्हेन यू Yep, लुक एट अ सीनियर प्लेयर, यू हैव टू सी के उनके साथ क्या किया जा रहा है. सी ही इज इन द correct. मिक्स. एंड नाउ व्हेन द सीनियर्स आर नॉट देयर एंड ही इज जस्ट प्लेइंग वन फॉर्मेट, तो उनको अभी कप्तान भी बनाया गया. सो इज अ कैप्टन, ही इज द लीडर ऑफ द पैक. तो ये सब जो आप देखते हैं ना, और बैटिंग जो उनका रस्टी लग रहा था इंग्लैंड में, अभी थोड़ा उनको रन मिलने लगा है. तो बिल्कुल. आई थिंक ही On इज tough ट्राइंग टू tracks. गेट ही इज ट्राइंग टू गेट इनटू दैट स्पेस. तो ये क्लियर है कि रोहित शर्मा वांट्स शिखर, बिकॉज दोनों की साझेदारी भी उतनी अच्छी थी. दे हैव डन अ ब्रिलियंट बिल्कुल, जॉब 5,000 टुगेदर. runs आई together. थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में दे विल बी थर्ड और फोर्थ I think the टुगेदर. third. Yeah, yeah, yeah. या तो एंड रोहित शर्मा बिलीव्स के अगर कोई कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, या फिर ही इज डन रियली वेल ओवर द इयर्स, यू कांट जस्ट डिस्कार्ड हिम. सो वो कुशन रोहित शर्मा जरूर देते हैं. एंड इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जब आईसीसी इवेंट्स की बात करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए. तो And he has that. रोहित शर्मा ने ये कहा है, तो उसी के साथ स्टिक कर रहे हैं. तो आई एम कॉन्फिडेंट दैट शिखर विल बी इन द मिक्स अनलेस देयर इज सम फोर्स चेंज. बट Yeah. आई थिंक ही इज इन अ प्रीटी गुड स्पेस.
and he's fit. I mean, there are very, very few 36, See, that 37 is year old see openers. that is become the benchmark. See, fitness, you just have to be there. You can't just fool around with not being fit. Because if you see MS Dhoni at 40 or 41, he made a statement. He said that if I'm part of the team, I may perform, I may not perform, but nobody should tell that MS Dhoni is not fit. If I'm Yep, yep. fit, if I'm running around and I'm doing everything that a young guy can do, then I'm happy and I'm giving my best. बिल्कुल, बिल्कुल. Exactly, the bar has been set so high. I'll put up a third poll for our viewers here. Does Dhawan fit into India's new aggressive template? This is only for the viewers. आपके पास 20 सेकंड है. Coming to the inevitable man of the moment, Virat Kohli. बहुत सारे लोग ने अपने views share किए. You've always been very, very forthright in your views. Where do you see this? What is the solution perhaps to Virat Kohli's problems? Kya karna chahiye? And do you agree with the rest he's taken right now? Uh, देखिए, It's a when you tough. talk about yeah, when you talk about Virat Kohli, we also have to understand the things that he has achieved. It is not normal. You know, getting those Exactly. 70 hundreds in a span of say 10 years, it's outstanding. Who Yep. are the other players who have done that? Not many. So we Not have many. to, that is the reason why Rohit, Rahul Bhai, and the team are backing him. They know if one knock he gets, and then things will turn around, and suddenly you will see the old Virat Kohli. And when you have that Virat Kohli in your team and you're going for the T20 World Cup and the World Cup you're talking about, the 50 overs, I think uh, any team Yep. would do anything to get him, that Virat Kohli. So I think it's just matter of time, and I believe, like you know, when you look at Virat's batting, it's not about the skill, it's not about he's not timing well or his fitness has taken a beating. He's just there. I think better than Yep. others with all his work ethics and discipline and all. Only thing is that maybe mentally he is little caught up somewhere. That's what I feel. Maybe that is the reason why the regularly he's been taking breaks because we have to Yeah. understand last couple of years were very challenging with those bio bubble and all, and you don't know how it affects individually. Like for me, I may be all right, I may be fine. Hmm. Somebody else can take 6 days. Somebody, the other guy can take 6 months. Nobody knows because we are all different. So that also we have to keep in mind. But saying that, I think Virat, what he's done for Indian cricket, he's getting the right kind of backing. Personally, I feel he should have been there in the West Indies tour because this was a great opportunity for him to make a comeback and get some great runs. Comeback, as in I'm talking about runs, nothing else. बिल्कुल, बिल्कुल. हाँ Yeah, yeah. हाँ Yeah. एक बार उस तरीके के बैट्समैन को रन लग गए, then things change drastically. And I'm sure what I'm hearing is कि शायद वो वेस्ट इंडीज टूर के बाद he'll be going for all the series that is going to Yes. happen from now on. I don't think he'll take break. So it's a great thing. He should be doing that. Yeah. बट सेइंग दैट मुझे नहीं लगता उनके स्किल वगैरह इसमें किसी में भी कोई तकलीफ है या कोई प्रॉब्लम है. Yeah. He's been batting Yeah. brilliantly. Only thing is that थोड़ा सा कभी कभी ना मेंटली आप अपने आप को कैसे संभालते हो, क्या करते हो, वो चीज शायद सबको होता है. वी हैव सीन क्योंकि डिमांड इतनी हाई हो जाती है ना आजकल इंडियन क्रिकेट में. Yep. जो Yep. स्केड्यूल आप बात कर रहे हैं, द बिगेस्ट एग्जांपल आप देखिए, यू लुक एट बेन स्टोक्स. He just said, "Boss, we're not like a Can't do vehicle. it. Okay, you put petrol, and we just start running." So at times this affects everybody, and बिल्कुल. तो वो चीज भी सोचनी पड़ेगी हमें. बट सेइंग दैट ही मस्ट प्ले बिकॉज अगर आप खेलोगे ही नहीं तो हाउ विल यू गेट द कॉन्फिडेंस. It's yeah, exactly. It's a very, very tricky one, and so many former players are also, they seem divided because बहुत लोगों ने कहा कि अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो आपके रन्स ब्रेक से नहीं आएंगे, नहीं. बट देन इक्वली लोग कह रहे हैं अगर आप थोड़ा स्विच ऑफ हो गए तो शायद वहां पे आएगा. नहीं, एंड दैट आप जो कह दैट रहे इज हैं,
That is the reason Yeah. why Rohit and Rahul bhai have been very, very careful. You know, they're giving him thoda sa break, on and off kar rahe hain. They're giving him that Yes, yes. time to settle down. It's not about his skills anymore. It's about his mental space. So that is where they're working, I feel. Correct. या नहीं और अगर जस्ट जस्ट टू ऐड ऑन अगर हम विराट की बात करें इवन फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव योर पर्सपेक्टिव जर्नलिस्ट हु आर ट्रैवलिंग विद द टीम क्योंकि आप मौके आ रहे हैं ट्रैवल करने के लिए सब कहते हैं कि यार इस बंदे ने कुछ कमी नहीं की अपनी प्रिपरेशन में ही इज नॉट लैकिंग फॉर अ सिंगल थिंग उनकी इंटेंसिटी ड्रॉप नहीं हुआ ये ज्यादा गेंदें खेल रहे नेक्स्ट में एवरीथिंग इज गोइंग राइट बट समहाउ ऑन द फील्ड इट्स नॉट ट्रांसलेटिंग कहीं Ja- ना कहीं खुद जो Jimmy, बात उन्होंने I'll जितना tell you. हाई हाई सेट किया No, I'll tell you, हाँ Jimmy, this is not mathematics. 2 plus 2, 4 every time you get it. हाँ हाँ This is या sport. That is the beauty. So इट that is इज the या reason why we say he's been exceptional because जो conversion rate था उनका, that was like tremendous. He used to go into Absolutely. bat and get hundreds. That Yep, is like yep. the bar was so high that अभी हम बात नहीं करते कि वही विराट कोहली वही है got a 40 या 30. उसका 50 भी एक failure count होता है. It's like his एग्जैक्टली bar ही is सेट द like बार 100. या हाँ वही तो वो भी हमें वही समझना पड़ेगा कि स्पोर्ट में कभी कभी मतलब यू कैन बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड यू नो दिस ऑल्सो राहुल भाई टोल्ड मी लाइक यू नो यू हैव जी बीन बैटिंग रियली वेल इन द नेट्स मैच सिमुलेशन में यूर टाइमिंग रियली वेल एंड यू आर सो कॉन्फिडेंट यू वॉक इन द नेक्स्ट डे फॉर द गेम मिडिल में जाके राइट पहला बॉल बॉलर ने इन स्विंग डाला बॉल आउट स्विंग हो गया कॉट बिहाइंड so that is the beauty of the sport. That is the reason they say कि जैसा मतलब all these great cricketers they have said that के more than successful cricketers they are failures because उनका अगर innings आप देखें अगर इतना ही everybody is so world class तो अगर 300 मैच खेले तो एटलीस्ट 200 100 तो होने चाहिए. सही है सही बोला बिल्कुल No, and I think मैं आपकी बात से सहमत हूँ. I have never seen a sport which goes up and down so much. And then you have three formats inside that one sport. ये बहुत ही True. unique है. But इसी बात पे you did raise the Ben Stokes issue. We saw Dickov also yesterday said कि भाई तीन format leagues के साथ बहुत it's almost unsustainable. How as someone who's now part of watching players, managing players, seeing क्या करना चाहिए because there's so much cricket and it's really impossible to say like you mentioned Ben Stokes saying that we're not cars. Do you see more high No, profile players doing this? you never know. You never know. See, I strongly feel you have to look at those bilateral series. And maybe when you talk about ODIs, you know, those olden days we used to have this 4 5 teams coming and playing tournaments together, a big series or something like that. Maybe something to work on. क्योंकि अगर आप बायलैटरल सीरीज की बात करें तो मुझे नहीं लगता वनडे में इतनी भी व्यूअरशिप हो रही है. नहीं है तो नहीं है हाँ तो उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए मुझे लगता है कि कुछ ऐसा किया जाए जैसे एक छोटा सा मतलब टॉप 3 4 टीम आके एक टूर्नामेंट खेलेंगे एनी सीरीज दे प्ले लाइक वी यूज टू हैव टाइटन कप वगैरह सब सो जब अरे बचपन क्या में देखते थे. हाँ बात तो वो चीज बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो देखते हैं वो कैसे होता है क्योंकि दैट इज व्हाट वी नीड टू थिंक वी नीड टू बी अहेड ऑफ ऑल दिस थिंग्स. if we are not ahead तो हमें unfortunately देखिए because now the flavor is T20 so all the players yep what they will do is they'll choose test cricket and they'll say okay if I play T20 then I'll be playing other leagues as well and also it is right on their part because financially also they have to be secured and बिल्कुल that's how it goes but one day cricket is like left alone. So everybody yes is saying वनडे क्रिकेट में करना क्या है हमें अभी. तो इसलिए फॉर दैट रीजन मुझे लगता है बायलैटरल सीरीज थोड़ा सा कम करके you can have some other series that involves 3 or 4 teams something to make things interesting. बिल्कुल no I think I mean logically वही है because I have found increasingly maybe पिछले 7 8 साल maybe से maybe get the reverse swing back. Yeah, exactly. There's so again. There's so many factors. The pitches, the bat size, ball swing, बहुत कुछ है. But I agree with you. Bilateral series मतलब आजकल फिर भी वो 7 मैच वाले नहीं होते थे जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में होते थे. 7 मैच सीरीज like यार 10 साल पहले 15 years ago we found it too much.
I think exactly, bring the Tri Series back, bring the quadrangular, give some context. ODI Super League जो आईसीसी ने स्थापित किया था, that's fine, but उसी के अंदर cut down on the bilaterals. Otherwise, you're going to find more And people. And मैं मानता and हूँ Ben Stokes is an all-rounder, but it's just I not think enough. I think South Africa was playing against Australia some one day series. They did not play that, right? बताइए, बिल्कुल सही बात. हाँ, That's a because big statement. मुझे पता नहीं. वर्ल्ड कप राउंड द कॉर्नर है, मतलब 15 महीने है. And बिल्कुल. then a team like South Africa are just forfeiting their championship Points. points, Points, and yep. they're willing to play the qualifiers. So something we need to think about because this never बिल्कुल. used to happen before. नेवर एंड प्रज्ञान उसी हफ्ते में ये जो आप कह रहे हैं दिस न्यूज केम आउट के साउथ अफ्रीका हैव chosen willingly to forfeit points and literally I think 5 days later came news that Ben Stokes was quitting ODIs. तो ये बहुत बड़ा वेक अप कॉल है आईसीसी के लिए हमारे इस प्यारे गेम के स्टेक होल्डर्स के लिए शेयर होल्डर्स के लिए कि डू समथिंग. We're almost running out of time. I want to shift the focus briefly back to the T20I format क्योंकि 3 महीने के बाद एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कप है. From an Indian perspective, all that happened to India पिछले वर्ल्ड कप में वो पहले 2 मैच हार के जो झटका लगा. How do you see the growth of the T20I side in the 9 months since that failure of a World Cup, I we think could I say? think that was very well addressed by the current captain Rohit Sharma. That Hmm. he wants to play in a certain he has a certain template and he wants his boys to play accordingly because that was something which was missing. आप टैलेंट की बात करें, टीम कॉम्बिनेशन की बात करें या फिर मैच विनर्स की बात करें, वी हैड एवरीवन इन द टीम. बट मुझे Correct. लगता है कहीं ना कहीं वो टेम्पलेट शायद थोड़ा सा सही नहीं बैठा. We can't say it was wrong or right, but sahi बैठा नहीं. It didn't work out for us. So I think that is where Indian team is working on. एंड जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं तो इसीलिए मैं कहता हूं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली आर वेरी इंपॉर्टेंट वहां पे, क्योंकि वहां पे गेम अलग चलने वाला है, ग्राउंड्स बड़े हैं एंड पिचेस अलग होंगी, तो एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए. नॉट फॉर द लीग मैचेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट Yeah, हर्डल yeah. दैट वी ऑलवेज गेट स्टक, semi-finals or maybe Correct. Correct. quarterfinals. Correct. वही and Virat's got a damn good record there also in Australia. And despite the fact that रोहित 35 के हैं, विराट 34 के होने वाले हैं, you do, there नहीं, is लेकिन no ये price to ये pay. जो एज की बात है ना, ये मे बी यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आफ्टर 2023. Yeah. क्योंकि आप सडनली चेंजेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज यू आर बिल्डिंग बिल्कुल, you ऑन have two समथिंग. World Cups. या यू आर बिल्डिंग ऑन समथिंग. यू कांट जस्ट सडनली चेंज योर कोर टीम. तो आई थिंक ये जो Correct. टॉक है ये होनी चाहिए दो 23 वर्ल्ड 23. कप के बाद, कि क्या है आगे, क्या करना है, द वे इट हैपेंड इन 2011. तो Yep. वो चीज तभी के लिए ठीक है, अनलेस जैसा मैं कहता हूं कि इट्स स्पोर्ट्स, तो इसमें कुछ भी हो सकता है, इट्स अ स्पोर्ट, कुछ भी हो सकता है. फोर्स चेंजेस अगर हो तो अलग बात है, बट अदर देन दैट आई फील के कोर टीम तो कोर टीम रहनी चाहिए. वन फाइनल क्वेश्चन फॉर यू प्रज्ञान. ये जो रोहित को बीसीसीआई ने कप्तान बनाया था अक्रॉस 3 4 मैच, इट वॉज कीपिंग इन माइंड अभी जो आपने कहा था कि 9 महीने बाद, उस टाइम पे अपॉइंटेड 9 महीने बाद T20 वर्ल्ड कप है और अगले साल इट्स ओडीआई वर्ल्ड कप. इट सीम्स दैट दे वांटेड समवन जिसके पास ऑब्वियसली वो स्टैचर है, बट समवन who could lead this team keeping in mind those two tournaments as well as the fact कि इंडिया की पूरी कोशिश रहेगी WTC फाइनल पहुंचने के लिए. बिल्कुल. और बिकॉज विराट इतने सक्सेसफुल कैप्टन रहे थे, तो रोहित को इतना मौका नहीं मिला. बट रोहित इज Yep. इक्वली अ ब्रिलियंट कैप्टन, इज अ ब्रिलियंट माइंड, वेरी शार्प. गेम रीडिंग बहुत अच्छी है उनकी. तो मुझे लगता है कि मतलब बहुत कम बार ऐसा होता है कि एक कैप्टन जा रहा है और दूसरा आपका बहुत ही वर्ल्ड क्लास कप्तान रेडी है. यू रेडीमेड नो या. बिल्कुल. तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था. बट सबसे बड़ा चैलेंज अभी ये रहेगा कि नेक्स्ट कैप्टन कैसे क्या रहेंगे, कैसे रोहित उनको बनाते हैं, वो इम्पोर्टेंट रहेगा. लेकिन आई एम वेरी मच विथ द डिसीजन के रोहित आपके पास एक कप्तान रेडी है, तो क्यों ना उन्हें उनका एक्सपीरियंस यूज करें. क्योंकि जो प्लेयर 5 आईपीएल ट्रॉफी जीत सकता है,
एंड मतलब काफी लोगों ने कहा है कि जो चेंजेस करते हैं एंड द रीडिंग दैट ही हैज अबाउट द गेम इज ब्रिलियंट। तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है देन। इस साल आपने देखा हार्दिक पांड्या इज डन ब्रिलियंटली एज अ कैप्टन। और मैं मानता हूँ, देखिए, गेम रीडिंग आनी चाहिए कप्तान को। और गेम रीडिंग कब आती है? व्हेन यू बैट इन द मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर। क्योंकि वहां पे गेम आपके हाथ में नहीं होता है, आप गेम के हाथ में होते हो। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि 10 ओवर में मुझे क्या करना है, कौन कैसा क्या, पूरा गेम रीडिंग आपके पास होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो यू कैन नॉट बी अ ग्रेट चेजर। तो आप देखो, द ग्रेट चेजर्स आर ब्रिलियंट कैप्टन्स। एम एस धोनी देख लीजिए, सौरव गांगुली देख लीजिए, देन उसके बाद कपिल देव दीजिए, सारे जो बिग चेजर्स सब वैसे ही हैं। Yep, yep, तो yep. इसीलिए मैं मानता हूं कि आई थिंक हार्दिक हैज अ वेरी गुड हेड। थोड़ा सा निखरेंगे और निखरेंगे जैसे जैसे करते Sure. रहेंगे। बट जितना भी देखा है, इज डन अ गुड जॉब। And it could arguably be the story of 2022 from an Indian perspective. Getting Hardik Pandya fit again, getting him bowling, and again, I think the fact that he got to bat at 4-3, सबसे बड़ी बात from an Indian perspective, it is that in my view. We've totally run out of time, Pragyan. Thank you so much for your time, your प्लेजर questions. प्लेजर बहुत जेमी। सारे viewers ने कहा please come back. Thank you for all your viewers as well, and always a pleasure talking to you, Pragyan. थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर गाइस। Thank you. Take care. Bye, everyone. Bye, Pragyan. Thank you.